पहिली आरती होईल। आरतीनंतर दर्शनास प्रारंभ होईल। अब शिरडी माझे पंढरपुर यह आरती होगी। आरती के बाद दर्शन कतार शुरू होगी। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हरि ओम। इमं देवा असपत्नग्नो सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराज्याय इममो ममुष्य पुत्रममुष्याः पुत्रमस्यै विषे एषवः कुरवो राज एषवः पञ्चाला राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानाग्नो राजा त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। प्रातः पूजनार्थे गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य अथ धूपः वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् धूपमाघ्रापयामि साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापः दीपं दर्शयामि धूपदीपान्ते उपहारनैवेद्यं निवेदयामि चतुष्कोणमण्डलं कृत्वा तदुपरि नैवेद्यपात्रं निधाय गायत्रीमन्त्रेण पात्रान् प्रोक्षयेत् सत्यन्तवर्तेन परिषिञ्चामि धेनुमुद्रां प्रदर्शयेत् ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। मध्ये पानीयं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि करोद्वर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि तथा च मङ्गलारार्तिक्य दीपं दर्शयामि। शिर्डी माझे पंढरपूर साई बाबार मावर बाबार मावर साई बाबार मावर शुद्ध भक्ती चंद्र भागा भाव पुंडलिक जागा पुंडलिक जागा भाव पुंडलिक जागा याहो याहो अवघे जन करू बाबांसी वंदन साईंसी वंदन करू बाबांसी वंदन गणो म्हणे बाबा साई
धाव पाव माझे आई, पाव माझे आई, धाव पाव माझे आई. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. ओम साईराम. सर्व साई भक्तांना कळविण्यात येते की श्रींचे दर्शनानंतर उदीप्रसाद काउंटरजवळ नाश्ता पाकिट व श्रींचे महाप्रसाद भोजनाकरता टोकन कुपन देण्यात येणार आहे. तरी सर्व साई भक्तांनी सदर टोकन वा कुपन घेऊनच नाश्ता पाकिट घेण्यासाठी व श्रींचे महाप्रसाद भोजनाकरिता श्री साई प्रसादालयात जाण्याचे करावे ही नम्र विनंती. ओम साईराम. ओम साई राम. सभी साई भक्तों को ये सूचित किया जाता है कि